Yeah, so what I'm saying is correction is of two types. One is price and one is time correction. Okay. So let's now understand कि price correction क्या होता है. So price correction is very fairly simple, right? If the market has gone upwards to a point and then market starts to correct in a way that the prices are falling. Okay. So Tata Motors में क्या हुआ? Tata Motors में is it a price correction or a time correction? It is simply a price correction, right? यहाँ पे एक price correction where the prices have fallen nearly by 20%, 30%. Okay. Bitcoin में if we look at this phase, ठीक है, ये जो phase है, this is a price correction, this was also a price correction, ठीक है. So I hope price correction is clear. मतलब market वहां पे गिर रहा है, market is basically falling just to make the prices reasonable. ठीक है, is this clear? Any doubt? That means overbought zone से fair value में आ रहा. कह सकते हो, right? Overbought zone से fair value पे आ रहा है. Now there is another form of correction, that is what? That is time correction. ठीक है. Now what does this mean? इसका मीनिंग कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मार्केट गया ऊपर, जाके फिर पॉज ले लिया. सो इट डजंट गो अपवर्ड्स और डजंट कम डाउनवर्ड्स, इट्स जस्ट दैट इट इज साइडवेज. सो दिस इज जस्ट स्पेंडिंग टाइम इन अ रेंज. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ करेक्शन. ठीक है. And this is called as time correction. This is where the prices don't usually fall, but market just keeps on passing some time, passing some time. अभी आप पूछोगे why will this, why is this even happening, right? So whenever markets are in range, जब भी range में रहता है, see there are a lot of things going on. First is जो छोटे players होते हैं, those who are smaller investors, right, they will always have a lower amount of patience. If you are putting in 5,000 rupees in BTC, you will expect कि अगले दिन वो double हो जाए. Obviously, people expect anything out of the markets, right? So if the markets are in a range for a longer period of time, it means that what will happen? Someone who invested at this point, someone who invested at this point, they will slowly start to lose interest and they will they will take out their funds. Okay, this is for the investors. Again, for the traders also, what will happen is they will start to not trade. Okay, so अगर ऊपर में किसी ने short sell करा होगा, so they will wait कि market will come down, but market is not coming down. Obviously it does depend on the range size as well. Again, that is something to be noted, but what I am talking about here is there is no major fall in price, just that the price is passing some time in range. Okay, so मार्केट में बेसिकली यही दो चीजें होती है. ओके, सो हियर यू कैन क्लियरली सी द मार्केट्स वेंट अप टिल दिस पॉइंट, फिर देयर इज अ फेज वेयर इन द मार्केट्स आर मोर और लेस साइडवेज. Yeah, we can't consider this to be 100% time correction. The reason is market did fall from 73 all the way to 50. So हाँ, क्योंकि क्रिप्टो है तो इतना volatile है, but still it does look like a time correction, right? Let's look at something better, maybe Nifty. Nifty को देखते हैं. So here we'll have a good idea of what the time correction exactly means. Look at this. Market gave a rally till this point. Till this point, let's consider. फिर market turned sideways, right? So this is a kind of a time correction. And then again the markets moved upwards and then came a price correction. Okay. So how does price action work? कैसे काम करता है? How does the markets move? So basically there will be a phase, there will be a bullish phase. Then either it will be a time correction, okay, then there will be again a bullish phase, okay, and then there can be a time, price correction, then again it will go upwards, again a time or a price, whatever. So इस तरीके से markets move upwards. And ये कैसा market है? This is a bullish market. We are more inclined towards bullish markets because the crypto market is expected to be bullish. Okay, so let's now look on the Bitcoin chart. इस पे देखते कि exactly what's the case right now. Why what is exactly happening? Now you can clearly see from here till here the markets gave a move, right? And from here एक छोटा सा price correction आया. Now what exactly now is going on? It is in a sideways phase, right? So whether you consider this to be price or time correction, अगर आप daily time frame पे देखोगे, it will look like कि market is just sideways. Okay, it's spending some time, it's waiting for the new buyers to come in.
ठीक है, सो आई विल ऑब्वियसली कंसिडर दिस टू बी अ टाइम करेक्शन बिकॉज बहुत लंबा रैली मिल गया था, एंड देन मार्केट्स विल स्पेंड सम टाइम हियर एंड देन इवेंचुअली हेड हायर, राइट? So is this clear, guys? Price and time correction. Do you have any doubts in this? You can, ask now if you want to. Anyone? सर एक तरीके से टाइम करेक्शन एक कंफ्यूजन फेज होगा, मीन्स पता नहीं हाँ, मार्केट कहाँ जा सकता consolidation, है। right? Consolidation. Okay, it's just consolidation. Let's say, for example, now Solana is 215, right? Look at this rally, time correction, rally. Okay, so this is what I'm talking about, right? यहाँ पे क्या हुआ? This is a time correction sideways. यहाँ पे एक प्राइस करेक्शन हुआ, राइट? सो अगेन आप बोलोगे कि भाई टाइम टाइम करेक्शन इज आफ्टर ऑल, व्हाई इज इट कॉल्ड करेक्शन? करेक्शन तो फॉल बोलता है, करेक्शन टेल्स की मार्केट में प्राइसेस है ना रीजनेबल हो रहे हैं। सी आई टेल यू वन थिंग, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ निफ्टी। ठीक है, निफ्टी मान लो लास्ट 2 महीने में 20% रिटर्न दे दिया। ओके, निफ्टी गेव अ रिटर्न ऑफ 20% इन लास्ट 2 मंथ्स। ओके, बट इन द सेम फेज a particular stock X, okay, a particular stock X has not even moved 1%. So for the stock X, right, the prices haven't moved, but for the whole market, the prices have moved. So we are talking about a relative kind of performance as well. Ki Nifty has outperformed X. Okay, are you understanding my point? What I'm trying to tell you? This also does matter. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन यूजुअली स्टार्ट्स टू मूव एंड देन द ऑल्ट कॉइन्स मूव, राइट? नाउ यू कैन क्लियरली सी सोलाना इज मूविंग मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बिटकॉइन। देख रहे हो आप? सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइस एंड टाइम करेक्शन। एंड है ना, अगर आप लोगों को ट्रेड करना है, मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, सो ऑलवेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो even essentially what we understand here is ki we are just doing trend analysis, right? So whenever time correction के फेज से अगला रैली स्टार्ट होता है, whenever there is a time correction and market starts to rally back, so there will be a good breakout, right? Just as it was on the daily time frame of BTC here, right? And the second thing is, if there is a price correction, फिर द मार्केट्स विल कम डाउन टू अ गुड सपोर्ट, फिर वहां से घूम के ऊपर जाएगा। सो one is support buying and the other is simply entering at the big breakout. Okay, is this clear, guys? Any question? किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है, प्लीज आप लोग क्लियर कर लीजिए। बाय द वे, आप लोग एक ट्रेड भी ले सकते हो अभी, बिकॉज इथेरियम इज गोइंग अपवर्ड्स। सो गाइस, किसी को अगर ट्रेड लेना है इथेरियम पे, आप लोग ले सकते हो। इथेरियम ने जस्ट ब्रेकआउट करा है। ओके, so Ethereum has just broken, and actually it is looking quite good. I'll explain a chart pattern also here. So you can see Ethereum पे क्या बना है। Ethereum पे it was a time correction, ठीक है, फिर यहाँ से it's starting to break out. अभी हाँ, we're not yet sure whether this will be a good breakout or not, but आप लोग देख सकते हो I have drawn two trend lines here. और फिर मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, it has moved out of this trend line, it has come down till this trend line, support लेके फिर वापस ऊपर जा रहा है। So I think this is a good position to enter Ethereum. किसी के पास अगर फ्री फंड्स पड़ा है, आप लोग लो लेवरेज पे just go ahead and place in a trade on Ethereum. How many of you are doing it with me? Quickly, guys. Meanwhile, Solana we have been tracking for a decently long time. This is also heading higher, right? So अगर आप लोगों को अभी क्विकली एक इथेरियम पे ट्रेड प्लेस करना है, यू जस्ट गो अहेड एंड डू इट नाउ। ऑलराइट, इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल ऑफ अस शुड बी इन प्रॉफिट्स, इवन ZRO हैज रीच्ड 5.6। ठीक है, सो हु वाज होल्डिंग ZRO हियर?
Yes, Yaksh. I think you should have some decent gains now, right? So 15 rupees as of now. I I only brought one ZR also. Yeah, you just increase your funds now. It's high time because Okay, sir. where you'll not have the fun of trading. Sure, sir. Yeah. Meme has हेलो started to rally. Who is here? Yeah. सर भूषण बोल रहा हूँ सर हाँ हाँ भूषण बोलो. अभी इथेरियम पे ट्रेड ले लूँ सर आप बोल रहे हो हाँ ट्रेड ले सकते हो. यू कैन. ओके कितना लेवरेज पे रख के करूँ 3 या 4 3-4x पे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. 3-4 एक्स पे ठीक है सर आई थिंक भूषण यू आर होल्डिंग ENS ऑल्सो राइट. ENS तो मूव कर गया अच्छा खासा. हाँ हाँ आज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वो सेल कर दिया था आई मीन अच्छा खासा अभी आ गया था ओके. या और कल आई गेस दूसरे सर ने भी बोला था कि पीप लेने के लिए राइट. पीप मैंने लेके रख दिया था एक्चुअली तभी मेरा कुछ काम आ गया था एक्चुअली 50% प्लस का गेन मिल गया था ऑलरेडी अच्छा. ओके. बाद में आई वाजंट नोइंग कि कैसा जा रहा है आई मीन एवरीथिंग सो हम्म. अच्छा मेरी छोटी सी पोजीशन थी उसमें बट लिक्विडेट हो गया मैं अच्छा लिक्विडेट हो गए. या ओके. तो हम लाइक थैंक गॉड मतलब छोटी सी पोजीशन थी तो इतना हाँ. कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा या गॉट इट. कोई नहीं. जस्ट बी या अ केयरफुल है ना. आज फर्स्ट टाइम पता चल गया कि लिक्विडेट होना क्या होता है आई मीन यूज्ड टू यूज दिस टर्म अ लॉट राइट लिक्विडेट होना आई राइट. यूज्ड टू वंडर कि व्हाट इज दैट कल हो गया पता चल गया ओके ओके उस हिसाब से मार्जिन भी बढ़ाना होता है एवरीथिंग राइट. सी या क्रिप्टो में देयर इज ओनली वन रूल एवरीवन राइट. सबको बता रहा हूँ कि इफ यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम लिक्विडेशन, ठीक है, गेटिंग लिक्विडेटेड, देन यू विल बेसिकली मेक मनी इन दिस मार्केट. आप 100% पैसा कमाओगे. इसमें बस एक चीज ये है, अगर आप लिक्विडेट होने से बच गए, ठीक है, हाई लेवरेज पे लगा के छोड़ दिया, फिर आप फंस गए, फिर दैट इज वेयर यू विल एंड अप विथ लूजिंग एवरीथिंग. सब पैसे गवा दोगे आप. राइट. सो दिस इज द ओनली thing because see there is a difference between crypto and other markets, and the major difference is volatility. यहाँ पे चीजें बहुत volatile है. The way it goes up, the in the same way it comes down. ठीक है. And can we please explain liquidity? Yeah, sure. So let's actually do it. There are a lot of new people. वन So मोर थिंग सर yeah. हाँ अभी मैं एक्चुअली प्लेस कर रहा हूँ ट्रेड आई मीन इसके लिए तो मेरे को एक्चुअली 4x पे करना है 4x इज नॉट कमिंग इट्स शोइंग डायरेक्टली 25 पे 25x लेवरेज तो उतना तो नहीं चाहिए नहीं 25 नहीं, उसको 4x नीचे उसको कम कर दो ना. 4x पे आ गया हूँ तो आई मीन इट्स शोइंग मी इनसफिशिएंट फंड्स हाँ. सो मिनिमम मिनिमम जो पोजीशन साइज होती है, आई थिंक इथेरियम की इट इज 12 या 13 डॉलर या $20 कुछ ऐसा है. यहाँ पे 26 का दिखा रहा है 26 दिखा रहा है ना. सो उतने का बनाओ. 26 USD पर फंड नया अभी. अभी आई मीन कल मेरा 5.3 था अभी अराउंड 6.6 है हाँ तो उतने का बना लो. तो 5x पे कर लो. 5x पे हो जाएगा. 5x ओके हम्म. 5x पे भी नहीं हो रहा आई मीन एक बार 6x करके 15 देखो. जस्ट डू 6x. 6x भी नहीं आ रहा सर इट्स ओके. डायरेक्टली शोइंग मी 300 कर सकते हो. 25 पे ही तो क्या ऑलरेडी यू हैव एनी पोजीशन और व्हाट ऑन नो इथेरियम? नो कैन यू शेयर योर स्क्रीन डेस्कटॉप पे हो तो. अभी डेस्कटॉप पे नहीं हूँ सर फोन पे हूँ अभी एक सेकंड और यू कैन डू वन थिंग, जस्ट शेयर मी अ स्क्रीनशॉट. ठीक है. हाँ हाय ओके सही Just share me a screenshot. I will sort this out. Yeah, who all took Ethereum, guys? Quickly. Anyone? What about the others? Kunal, Yaksh, Sai, Gautam. Sir, I don't have that much fund with me as of now. Okay, I got it. can't go to that. Hi, Mayank. Hi. भैया मैंने लिया है बट हंसना नहीं, मेरे पास फंड वगैरह नहीं है तो मैं डेमो में सीख रहा हूँ, तो डेमो में लिया आई थे कोई नहीं भाई, कोई नहीं. 500 रुपए डाल देना. ठीक है. हाँ है, मैं डालने के लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग करके 5,000 कर लिए है, 10 पे डालूंगा, 10 कर लूंगा जल्दी.
तो 10 पे डालने वाला हूँ। ठीक है, गुड। सी इट हैज मूव्ड एक्चुअली। यू नो अभी दो 3510 से 3525 पहुंच गया विद इन नो टाइम। हाँ दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर श्योर। मतलब कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो 100% श्योर होता है होने ही वाला है। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया है। लेट मी चेक बड़ी एक सेकंड। बीटीसी में भी थोड़ा बन रहा है क्या? हाँ हर जगह बन रहा है, हर जगह बन रहा है एक्चुअली। सी लुक एट इथेरियम, लाइक आपके आंखों के सामने उन्हें ट्रेड लिया एंड देन इट हैज जस्ट मूव्ड हायर 3529। कूल, सही है। So almost we are getting 0.6 0.7% move, right? So order value insufficient balance, okay, available this much 25x, okay। क्या कोई ओपन ऑर्डर है क्या या फिर नहीं तो अभी कुछ कोई भी ऑर्डर नहीं मेरे पास अभी, मतलब कल ही हो गया, मतलब एक तो कल हो गया, एक आज हो गया। ऑल राइट। तो फिर मिनिमम मिनिमम पे क्लिक करना है यार, मिनिमम 0.02 ETH वो वाला। हाँ हाँ सर, एक सेकेंड। 0.02 ETH, राइट? सो वही है फिर I think, वही मिनिमम होगा। में भी नहीं आ रहा सर। क्या आ रहा है? व्हाट इज कमिंग? क्या आ रहा है? एक बार स्क्रीनशॉट भेजना। मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस के दिखा रहा है मेरे को। अच्छा 5 6 या 30। आई थिंक बट ये जब 10x अभी मिनिमम ईथ पे अब अभी आ रहा है, बट फॉर 25x, आई मीन हाँ समझ गया, तो 25x। वो फंड का इशू है भाई, यू हैव टू इंक्रीज योर फंड। ओके ओके ओके, हाँ 25x पे करना सही नहीं रहेगा ना, राइट? नहीं नहीं वो इशू नहीं है, लाइक अभी तो मूव दे दिया है ऑलरेडी, सो अभी तो यू डोंट टेक एनी ट्रेड, ठीक है? इट हैज ऑलरेडी गिवन द मूव। या सो 3532। सो गुड मूवमेंट ऑन द चार्ट, अच्छा हमें मिल गया है। ऑलरेडी सीन अ गुड मूव। लेट्स सी वेयर सोलाना इज गोइंग एंड आई थिंक हाँ Solana has touched 216. So good. Actually, a good trade we captured, right? So, हाँ guys. So did you like the trade? How many of you liked it? किसी ने लिया? Anyone was able to capture this? Is there anyone? हाँ मैंने लिया है, 31 चल रहा हाँ, है, $31 पे। सही है. Cool. What about the others? Anyone? I also took it in Okay. INR. मिल गया कुछ? Any profit? हाँ 1.5% profit right now. So 1x leverage पे लिया आपने? नहीं, I took it at 3x. ठीक है, see I'll tell you one thing guys. अगर we are now looking at a quick move, okay, if the move is quick, like 1% target है, 2% target है, just take higher leverage and hold with a stop loss, okay? कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं 1% में क्या ही कमाऊंगा? what I will make with 1%? I will make only 100 rupees, right? But if I take 10x leverage and then I place all my funds in and then I have a 1% move, कितना कमाऊंगा? I will make 1,000 rupees. So leverage needs to be used in the right way. Now in this case I suppose, ठीक है, market just gave a very quick movement. Now this is where you need to learn a few things. एक बार में जब झटके में मूव आ जाता है, just book some profit, okay? Just book some profit when you are getting something, all right? And just hold the rest of the quantity with a cost to cost stop loss or a stop loss that is small enough. You can do it that way. अभी सबके सबके फंड्स अभी छोटे, सो कुछ एज सच कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं, बट हाँ you need to understand it, right? When you are creating a position size of $5,000 or $10,000 after leverage, which is not a big deal, right? आप $300 डालो, $300 is only 25-26,000. 25-26,000 से अगर आप है ना 20x लेवरेज पे, 20x लेवरेज पे और मेकिंग अ पोजीशन ऑफ 5 लाख रुपीस, सो दैट इज फेयरली फाइन। लाइक उस पे फिर अगर 1% का मूव आप कैप्चर कर रहे हो, देन दैट इज 5,000 रुपीस, व्हिच इज अ डिसेंट प्रॉफिट, ठीक है? सो फोकस ऑन इवन इफ यू आर ट्रेडिंग विद स्मॉलर कैपिटल, you just try to make sure that the way you are trading should, you are basically trading a higher amount of fund, right? You should be trading in that way.
assume that you have a bigger fund and just trade in that way. Okay, be that careful. Are you getting my point, guys? Yes, yes, sir. Got it. Got it. Got it. ठीक है, so I hope that is cool enough. और अभी नीचे भी आ गया है, so वो झटके में जो मूव आना था वो आ गया अभी अभी तो खैर let's see where this will go. I think the other coins must be falling down. हाँ, थोड़ा बहुत गिरा है. See, as I told you guys, ये जो टाइम है 7:30 to 8:30, इसमें कोई झटके वाले मूव्स ही आते हैं, राइट? मार्केट विल जस्ट गो अपवर्ड्स विद you know you know you just can't expect anything. The way it will go up, the way it will go up, in the same it will come down, right? So सबसे ज्यादा volatile phase होता है between 7:30 and 9:30, and then the markets usually develop a trend, and फिर उस trend को आप capture कर सकते हो. But Ethereum is looking good in my opinion. As compared to BTC, Ethereum is stronger. ठीक है, ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है अभी. So see, you must have seen only one thing, right? We trade mainly in the top 3 coins in terms of retail interest. Retail interest as in सबसे ज्यादा लोग इन्हीं पे ट्रेड करते हैं. Okay, and what are they? They are BTC, Ethereum and Solana. ठीक है, these 3. And then comes the altcoins, and altcoins can be different. Okay, so people have different what do you call it, setups for altcoins. We had shared an altcoin setup in the day 2, so I hope people are using it. So every weekend you know what you have, right? So if the markets are bullish, you can even capture up to 100% move in one day. Okay, which is practically possible. The reason is altcoins always move in that way when it comes to bullish markets. Okay, so again it is back up to 3525, right? Ethereum. So yeah, cool. Got it, guys? Even the volume is now favoring. You can see this, right? Whenever there is a good move, it should be favored by a good volume on the lower part of the screen. Okay, volume means that a lot of contracts, a lot of coins are getting exchanged between the buyers and the sellers. So it basically means that a lot of people are buying, so a lot of sellers are also exiting. And look at this beauty, it is going upwards like anything. Okay, anyone else who is in the trade, guys? तो मैंने तो स्टार्टिंग से होल्ड करके रखा हुआ था उस टाइम से ही. Got it. So अभी आपका प्रॉफिट में आ गया? सर अभी तो 25% है. 25% प्रॉफिट? यस सर. सही है, cool, awesome. Anyone else? No worries. So 2550, 2560, 20, sorry, 3550, 3580, 3600. What do you think? What will be the target of this Ethereum? कितना ऊपर जाएगा? What are your expectations out of it? Quickly, guys. अभी के लिए तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट 550 के आसपास जा सकता है, या फिर उसको टच करके फिर से नीचे आएगा सपोर्ट लेने, फिर ऊपर जाएगा मे बी. Yeah, possible है. Quite possible. Let's see. ये कैंडल अगर 3540 तक चला गया, राइट? इफ इट क्लोजेस अबव 3540 ना, जो करंट 5 मिनट कैंडल है, सो देन वी कैन एक्सपेक्ट 3550 आल्सो. कोई इशू नहीं है. Great. So yeah, this is the beauty of crypto, guys. मिनट में 1% 2% ऊपर चले जाता है, नीचे आता है. So if you are able to trade, then obviously you'll be able to make money in this. So just to let you know, guys, you know those who are new, again, please complete your account opening. All right, so we have already informed everyone on that, and just deposit some funds so that we can trade together. And apart from that, who is new here? So I think only brother, pro with bro, what's your good name, man? Others. Adarsh, okay. So Adarsh is new. Anyone else who is new today in the session? Kabir, I'm aware. ठीक है. So yeah,
So we'll have our live trading session at 8:30, right? So 7:30 to 7:30 को हमारा क्या होता है? We have this conceptual session जहाँ पे we learn something, right? And from 8:30 to 9:30 we will have the live trading session that is CoinSwitch exclusive. As in, we are hosting it for CoinSwitch, right? And all of us are allowed to join it. So me and Vipul are taking those sessions every day. So, uh, if you want to continue this trading process, so obviously, you can be a part of those sessions too. So we are sharing those links. So just hop onto that link, and then we will continue it, right? So again, just a quick recap. We studied about price correction, time correction, and how price moves from a consolidation zone to a breakout zone. We shared on trade setup on Ethereum. It did work pretty well, right? And yeah, anything else, guys, that you would want me to discuss? And in this way, we will be continuing to explore more options, more uh, topics, right? We will learn and then we will deploy it, right? So just a request, try increasing your funds because ठीक है अभी चीजें थोड़ा बहुत पता है हमें, विल नॉट बी टेकिंग एनी बैड डिसीजन जिससे हमारा कोई मेजर लॉस हो जाए, राइट? ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस हिट होती है, इट्स नॉट अ बिग कंसर्न, ठीक है? एंड वी आर ट्रेडिंग विद लोअर लेवरेज एनीवेज, सो but do not have this mindset कि हमेशा lower leverage से ही करना है, because in some cases you will have a scalp setup. Scalping क्या होती है, wherein you are expecting a small move and उसके बाद फिर you are trying to capitalize that. So in those cases, again, leverage is something that is essential. Okay, so do it that way, guys. I hope I'm clear. All right. Cool. So we will wind up here for today. Okay, so we'll again connect at 7:30 tomorrow. And please join the live trading session as well. That is scheduled at 8:30. So the link will be shared in the group. All right. Thanks. Thank you so much, everyone. Thank you so much for Thank you, attending. sir. Yeah, cool. Thank you. So thanks, everyone. Okay. Goodbye. Have a nice day. Yep. Thanks, Vishal. Hello. Hello. Hello.